Over the past few days, we have seen a very, very disturbing trend, a very, very disturbing event that took place in Udaipur, something that shook the conscience of this entire nation. इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान. Mr. Khan, thank you very much for joining us. My first question to you is, what will you have to say about the execution of Kanhaiya Lal? I think words cannot be adequate to express one's feelings. It was so ghastly, so heinous, so barbaric. But I am not among those who are surprised, because we have institutions where minds are being radicalized, where education is being given in a manner which indoctrinates the mind, which radicalizes them. And they genuinely come to believe that if they indulge in this kind of violence, then it can earn them religious merit. And I am not saying so today when I have seen this. I wrote this article in 2008. I wrote a letter to some leading madrasas early 2008. I quoted excerpts from the books which are part of their syllabus. And I said, if you are going to read this, if you are going to teach this to these young children who have an impressionable mind, then what is going to happen? And this I had done at the time when Deoband people had organized a conference against terror in Delhi. I wrote a letter, congratulated them for the initiative which they have taken. But in the same letter, I pointed out, but there is some problem that some of your books, this is what they contain. And they are part of your syllabus. तो आरिफ साहब, आपका ये कहना है कि ये जो रेडिकलाइजेशन है ये समस्या है, और ये मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी वजह से है? मेरा कहना नहीं है. मैंने तो 2008 में कहा था, लेकिन अभी मैं रिसेंटली आपको बताता हूं, जावेद अहमद गामदी, उनका कोई और काम ही नहीं है. वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, पाकिस्तान के हैं, और अपने व्यूज के कारण वो कहते हैं कि वो ऑल्टरनेटिव नरेटिव देते हैं. और बहुत रेस्पेक्टेड स्कॉलर हैं. जो उनके विरोधी हैं वो भी उनके स्कॉलर होने को मना नहीं करते. और पहले बेचारे अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से भाग के दुबई गए, फिर मलेशिया में रहे, फिर वहां भी जान को खतरा हो गया तो अब अमेरिका में. जावेद अहमद गामदी का मुझे अकेले मत कहिए, जावेद अहमद गामदी का यूट्यूब पर क्लिप है. मैं उसमें से 2-4 कोट बताता हूं आपको. ये जो दहशतगर्दी इस वक्त आप देख रहे हैं, इसका सबब, कारण वो मजहबी फिक्र, धार्मिक चिंतन है, रिलीजियस थॉट है, जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है. यही इसका कारण है. और वो कहते हैं कि हर मदरसा 4 चीजें पढ़ाता है और हर मजहबी आदमी ये सिखाता है. वो आपके को के सामने ना सिखाए, लेकिन बाहर सूरत यही सिखाता है. वो क्या सिखाता है? पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा, और इन लोगों के नजदीक जो उनकी जिस तरह वो मानते हैं वो नहीं मानता कोई, वो शिर्क है, वो काफिर है, तो वो कहेंगे या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तिदाद होगा तो उसकी सजा मौत है, और ये सजा देने का हमें हक है. हमें से मतलब किसी भी व्यक्ति को. दूसरी, ये मैं नहीं कह रहा, जावेद अहमद गामदी कह रहे हैं. दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि उन पर मुसलमान हुकूमत करें. मैंने तो
इनकी किताब से 75 पेज का मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है। जो किताब इनके यहां शरीयत के नाम पे, शरीयत कहते हैं खुदा का कानून, और इसको गलत ये शरीयत कहते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा इसको फिक़ह कहा जा सकता है, जहां वो भरा पड़ा है इसी किस्म की बातों से। No, Arif Mohammad Khan, I wanted to ask you this question. Are you basically saying that this radicalization is a result of education imparted in madrasas, which has been a subject matter of intense debate, sometimes even political? मेरा सवाल आपसे ये है कि are you making an assumption that only those who are studying in madrasas are turning out to be radicalized, and not those who are highly trained professionals? Because you look at the, for instance, the Indian Mujahideen module, or for that matter, the international modules of, say, an ISIS, where extremely trained individuals, बहुत पढ़े लिखे, अच्छे स्कूल से पढ़े लिखे लोग जो हैं वो गए थे आतंकवाद में. Okay. When you say that they have been educated in modern institutions or other than religious education, as far as the inspiration for radicalization is concerned, did that come from that modern education? They have not studied in madrasa, but they have always remembered, such a committee says that only 4% Muslim children go to madrasa. I said don't accept even 4%, 2% go. But 99% of the mosques are under their control. The pulpit is under their control. It is they who pass on whatever they learn in the madrasa, they pass on to the general Muslim public through the Friday sermons. So who inspires them? And here I would like to refer to a study done by Dr. Suhail Abbas, a leading Pakistani clinical psychologist. In his now this is my old article, in his recently published study Probing the Jihadi Mindset. This book was published in 2006, in which this whole book is based. He's a clinical psychologist, he's not a political scientist. 517 mujahideen who were arrested by the Afghan government, they were returned to Pakistan and they were lodged in 2 different jails. Dr. Suhail Abbas interviewed each one of them individually. And based on those interviews, he has written this book. And the name is Probing the Jihadi Mindset. And in his study, he says 90% of them are product of Deobandi madrasas, and 10%, rest 10% were their sympathizers. This is not my conclusion. ठीक है आरिफ साहब, इसमें मेरा ये सवाल ये है कि अब आगे चल के क्या किया जाए, क्योंकि आज अशोक गहलोत भी गए, अब एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है और उनका ये कहना है ये सामान्य चीज नहीं है जो हुई है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तो ऐसे में आप तो आपका ये मानना है कि एक बड़ी बीमारी है जिसका इलाज करना चाहिए, लेकिन समाज में रेडिकलाइजेशन खत्म करने के या इस एक ऐसा वातावरण खत्म करने के लिए क्या किया जाए? नहीं, आप जब तक जहां से वो माइंडसेट बन रहा है जो एनाक्रोनिस्टिक है, जो जावेद गांधी कह रहे हैं, जो ये सोचता है कि दुनिया में ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हम बताएं लोगों को कि तुम्हें इबादत कैसे करनी, हमें जिम्मेदारी दी गई है हुकूमत करने की, जो ये दिमाग पैदा करते वो कैसे वहां पे, ये मेरा नहीं, ये भी जावेद गांधी का सेंटेंस है. वो कहते हैं जब तक ये एजुकेशन दी जाती रहेगी तब तक ये उम्मीद करना कि दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है, ये संभव नहीं. मैं मदरसे को बैन नहीं कराना चाहता. हाँ. मैं ये कहता हूं कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था राइट टू एजुकेशन, अब वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है. यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, वो भी यही बात कहता है 14 साल की उम्र तक की उम्र के बच्चे का ये बुनियादी अधिकार है
कि उसको ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन दी जाए, उसको स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ना दी जाए। आप मेडिकल नहीं पढ़ाते, आप लॉ नहीं पढ़ाते, आप बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ाते 7 साल के बच्चे को। 14 साल तक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन, उसके बाद उसे जो पढ़ना, हमारा लोकतांत्रिक देश है, आजादी है। लेकिन 5 और 6 साल, 14 साल की से कम की उम्र के बच्चे को उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी संवैधानिक तौर पर समाज की है, देश की है, सरकार की। 14 साल से And to that effect, you feel that this radicalization cannot happen by way of madrasas or by way of whatever method of education is imparted. I want to know from you, would you like to spell it out, Mr. Arif Mohammad Khan, very clearly? You're talking about a larger disease. Are you saying that madrasas should be regulated, shut down, brought under government control? What is your proposal? No, this is not what I'm saying. What I'm saying is, if you recall, when right to education was included in the fundamental rights, there was only one organization in the whole country which officially opposed it. You are from a leading channel. May I ask you, do you remember which was the organization? They had officially opposed it. Muslim Personal Law Board. I gave a lot of thought to it. Why they are opposing it? They were opposing it because today they recruit these young students. They promise that they will be given 4 or 5 pair of clothes. They will be paid every month 200 or 300 rupees. And they recruit them mostly from Eastern UP, Bihar, Bengal and Odisha. What they feared was that if free education becomes available till the age of 14, then their catchment area will dry up. That was the only organization in the country which had opposed right to education to be included in the fundamental rights. What I am saying, ensure that basic right of the children to receive broad-based education, and that syllabus will be decided by the government. It cannot be decided by others. And this is in consonance with the United Nations Declaration of Human Rights. Sure. After 14, family is free, this child will develop enough understanding of things. By receiving broad-based education, they are free to pursue anything which they like. ठीक है. Till 14, no specialized education. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरिफ मोहम्मद खान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you.